ट्विटर पर एक अकाउंट है एड मायोरियम डेल डे ग्लोरियम। ये आदमी जो है मेरे हिसाब से शायद से ये मल्लू है और ये आदमी ट्विटर पर धर्मांतरण करता है और ये हिंदुओं को पेगन लिंडू कहता है, पेगन लिंडू। इस आदमी ने मेरे साथ एक वार्तालाप शुरू किया। सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड एड मायोरियम डेल ग्लोरियम। I presume he must be from Kerala because his name is saying some Chako Ochan. So this man has initiated a dialogue with me on Twitter. So let me just see what dialogue he has started. So he is saying that Hindus can't even define what Hinduism is. Then he writes, why don't you try defining what Hinduism is rather than yapping? So as per this Riceback converter, Hindus don't know how to define Hinduism. Then he also asks a third question. So who gets to define Hinduism? Does every Hindu have to agree to this definition? But when the same reverse question was given to him, तो यानी ये आदमी ये कह रहा है कि हिंदुओं को पता नहीं है कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है और वो ये भी पूछ रहा है कि हिंदू धर्म का परिभाषा कौन दे रहा है और क्या सारे हिंदू उस परिभाषा से सम्मत हैं। जब यही प्रश्न मैंने उसके ऊपर उल्टा प्रश्न किया तो उसका जवाब देखो। All Christians are supposed to conform to a single edition just using your words here of Christianity. That's something that God himself wills and has revealed. Now let's get back to my question please. First question please. यानी ये ईसाई ये कह रहा है, ये मल्लू कन्वर्टर ये कह रहा है कि सारे ईसाइयों का एक ही पुस्तक है बाइबल जो उनके खुदा ने दिया है, ये उसकी इच्छा है और इसी के अंतर्गत सारे ईसाइयों का परिभाषा आता है, ईसाइयत का परिभाषा आता है। तो उसको उसका मजहब मुबारक। हम हिंदुओं को ईसाई नहीं बनना है, लेकिन इसके जैसे हिंदुओं को लिंडू कहने वाला हरामी मादरचोद ईसाई जो हैं ये गलत इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुओं का धर्म का कोई परिभाषा नहीं है। सी दिस क्रिश्चियन इज सेइंग, दिस कन्वर्टर इज सेइंग that Hindus don't know what is the definition of Hinduism and that all Hindus don't conform to that singular definition of Hinduism. What this guy is talking about his Christianity, we are not bothered. We don't want to convert to Christianity ever. But just to convert Hindus and to confuse Hindus, such converter missionaries try to create chaos in the Hindu mind by saying that Hinduism cannot be defined. Nobody has defined Hinduism. There is no particular singular unitarian definition of Hinduism to which all Hindus will conform to. तो मैं आज इस कन्वर्टर के बातों को झुठलाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि हमारे हिंदू शास्त्रों में हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का डेफिनेशन है। So today I am going to debunk this Christian converter and I am going to show once and for all to the entire Christendom that Hindus have a far better definition of Hindu dharma, Hinduism, Sanatan dharma or dharma in our Shastras itself, and we don't require any definition of Hinduism by Christians, ricebags, colonialists, Indologists and white supremacists. मैं आज हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि ईसाइयत से ज्यादा अच्छा उनके धर्म का परिभाषा हिंदुओं ने अपने धर्म का परिभाषा उनके शास्त्रों में ही किया है और हिंदुओं को किसी ईसाई, किसी राइसबैग, किसी मिशनरी या किसी विदेशी का या किसी सामंतवादी का, साम्राज्यवादी का जरूरत नहीं है हिंदू धर्म को परिभाषित करने के लिए। तो अब मैं उस चीज पर आता हूं। तो सर्वप्रथम ये जानना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन ऑफ एनी रिलीजन, एक धर्म का परिभाषा क्या है।
फिलोसॉफिकल अर्थात दार्शनिक एंड स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो और दूसरा डेफिनेशन होता है स्क्रिप्चरल बेस यानी शास्त्रीय आधार और रिचुअल फाउंडेशन अर्थात कर्मकांडीय पॉइंट ऑफ व्यू से या कर्मकांडीय आयाम। तो अब हिंदू धर्म को फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअली डिफाइन किया गया है मनु 1.108 to 7 और मनु 10.63। So any religion can be defined from two point of views. One is philosophical and spiritual point of view, and the other one is scriptural base and ritual foundation. So when we are talking about the philosophical and spiritual point of view of definition of Hinduism, it is clearly demarcated in Manu 1.108 to 7 and Manu 10.63, and I am going to study that today. So first I am reading Manu 1.108 to 7, and then I will hop on to the other verse, Manu 10.63. So what is the spiritual or philosophical basis or definition of Hinduism? Acharah paramo dharmah श्रुत युक्त स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः आचाराद्विच्यतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भागव भवेत्। अर्थात वेद तथा स्मृति दोनों में कहा हुआ आचार ही परम धर्म है, इसलिए आत्मज्ञानी ब्राह्मण इनमें सदा युक्त रहे। आचरण से रहित ब्राह्मण वेद के फल को नहीं पाता और आचार से युक्त ब्राह्मण संपूर्ण फल को प्राप्त पाता है। इस भांति आचार से धर्म की गति को देखकर मुनि जनों ने संपूर्ण तप की मुख्य जड़ आचार को माना है। सो दिस इज द धर्म डेफिनेशन philosophically point of view will be in 10.63. So what this verse is saying is that all the Hindu scriptures such as the Vedas, the revealed text and Smritis, which are the law books, both of them say that good behavior, righteous behavior is the foundation of Hinduism, and hence Brahmins should always have righteous behavior. It also says that even if a person is born in a Brahmin family, if he does not have good behavior, if he does not have good actions, then all his penances, all his austerities, all his wisdom, all his reading of scriptures, all his rituals and ceremonies will go in vain. Hence, all the ascetics and monks and sages of Hinduism have universally concluded that the basis of all asceticism, monasticism, worship, rituals, ceremonies, scriptures is only and only good behavior, righteous behavior or achar. Now, this verse has to be read in conjunction with another verse which is Manu 10.63. इसी चीज को मनु 10.63 में जवाब दिया गया है कि आचार क्या है. So this verse Manu 10.63 then dwells upon what is good achar. सुकर्म्स विच कंस्टिट्यूट धर्म. वो कौन से सुकर्म है जो धर्म को बनाते हैं? अहिंसा, सत्यमस्तेयं, शौचमिंद्रिय निग्रह, एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यं ब्रवीन मनुः. हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, पवित्र रहना और इंद्रियों का संयम करना, यह चारों वर्णों का धर्म मनु ने संक्षेप से कहा है. दिस मीन्स दैट entire humanity and especially the four varnas, the four castes of Hinduism, they have to follow the universal rules of humanity which are the foundation of Hinduism, which is non-violence, truthfulness, righteousness, non-covetousness, mental purity, spiritual purity, physical purity, cleanliness, hygiene, control of senses, control over lust. These are the basic foundations of the achars
that is the good deeds which are the cornerstone of Hinduism. So this is the philosophical and spiritual point of view of definition of Hinduism. Now ये हो गया आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम हिंदू धर्म के परिभाषा का. Now I will read the scriptural base of Hinduism. अब कौन से शास्त्र को हिंदू धर्म मानता है? जैसे ये ईसाई कह रहा है कि उनका खुदा ने उनको बाइबल दिया है और वो दुनिया के ब्रह्मांड के सारे ईसाई उस बाइबल को मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है. वैसे हिंदू धर्म में भी कोई एक ग्रंथ है क्या? उसका जवाब मिलता है मनु 2.6 में. So this Christian is saying that Christianity is a proper religion because it has one scripture which is the foundation of entire Christianity, whatever may be its sects and cults across the universe. So to say that Hinduism doesn't have any specific scripture is a fallacy, is a historical fallacy, because Manu 2.6 clearly says that there is a scriptural definition of Hinduism also. Manu 2.6, heartily I agree to it. Vedo khilo dharma mulang smriti shile cha tadvidam आचारश्चैव साधूनाम आत्मनः स्तुतिष्टरेव च. संपूर्ण वेद मनु आदि वेद के जानने वालों की स्मृति और उनका 13 प्रकार का शील, धार्मिकों का आचार और जिस विषय को स्मृति में विकल्प से लिखा है उसमें मन की प्रसन्नता, ये धर्म के मूल हैं. So this says that the 4 Veds, that is the cohesive Veds, and all the scriptures which adhere to the Veds, that is Manu, all the other scriptures which are conforming to Veds like Purans, Itihas, Gathas, Smritis, Shrutis, Upanishads, Vedant, Vedang, Aranyak, Sthal Puran, Mahapuran, and all the Smritis, that is the law books which are conforming to Veds, have the good behavior of the various illumined people in Hindu history. These are the basis of the rituals of the scriptures of Hinduism, as also one's humanity, one's personal judgment, rationality. So these are the scriptural basis of Hinduism. अब मैं पढ़ूंगा कि हिंदू धर्म का रिचुअल फाउंडेशन, कर्मकांडीय फाउंडेशन क्या है. ये दिया गया है भागवत महापुराण 11.27.7. So as I said, the last bulwark of any religion is whether its ritual foundations are defined, and for this we have to read Bhagavad Mahapuran 11.27.7, and that's precisely what I'm going to do. So 11.27.7 भागवत महापुराण. वैदिकस्तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणामिप्पिप्सन्तेनैव विधिना मां समर्चयेत्. अर्थात मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित. इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए. It means that in Hindu religion, there are 3 ways of rituals or ceremonies or worship. These are the Vedic, the second is Tantric, the third is Mishrit. Mishrit, Vedic we understand, conforming to the Sattvic Veds and its allied scriptures. Tantras means the Tantras and the Upatantras, that is their sectarian books. The third one is Mishrit, which is a blend of the Tantric and Vedic forms of worship, as well as the word Mishrit means the mixture done at the local level. So local tribes, local clans, local regions, local villages, local states, they may be having their own mixture of rituals, and those are also very much considered valid in
Hinduism as per Vaishnav traditions, as well as Puranic tradition, and as well as by Krishna himself, because this verse is given by Krishna. So मैंने साबित कर दिया कि हिंदू धर्म का डेफिनेशन है, बहुआयामी डेफिनेशन है. I have proved that Hinduism has a proper definition, a multi-layered definition. You can define Hinduism philosophically, spiritually, scripturally as well as ritualistically. तो आप हिंदू धर्म का परिभाषा दे सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, शास्त्रीय स्तर पर और कर्मकांडीय स्तर पर भी. तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि ये जो ईसाई हैं, ये लोग, ये हरामी लोग हिंदुओं को कंफ्यूज करके उनका धर्मांतरण करने के लिए अक्सर ये कहते रहते हैं कि हिंदू धर्म का परिभाषा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है. ओम हंग हनुमते नमः. सो आई हैव प्रूव्ड दैट दीज बास्टर्ड मिशनरीज, they will always try to say that Hinduism does not have any proper definition, so that Hindus get an inferiority complex, they become confusion infested, and in that chaos, mental chaos, they will convert into Christianity. That's their age-old definition and stratagem. This has been going on since the British times, when they started making wrong translations and transliterations of Hindu scriptures to confuse the Hindu mind and to somehow reap and harvest their souls. But anyways, I have proved today once and for all, not only to this one Mallu converter, but to the entire breed of Jesus Christ, that man born from a virgin, that Hinduism does have a definition. Hinduism was defined even before the birth of Jehovah and Jesus Christ and Christianity. And that definition of Hinduism is very, very layered, is very, very clear, and is also very intensive and extensive. Om Hang Hanumate Namaha.